I'm Nivedita Sahu, and I joined Silver Age Foundation in the year 2022. I think most of you will be knowing me. Knowing means it's just like that we see in the yoga class only. So that's how we came to know each other. तो क्या है, अभी जब मन की बात के बारे में जब बोलना चाहेंगे, तो मन की बात, मन तो अजीब चीज है। देखा जाए तो हमारे शरीर में सब ऑर्गन के लिए जगह है, मगर मन के लिए कोई जगह नहीं। मन चारों तरफ फैला हुआ है, चारों तरफ फैला हुआ है। इसीलिए हम मन को एक अलग पहचान देते हैं। वही मन में कितने बातें उठती है, क्या होता है पता नहीं, मगर एक एक समय में एक एक बात मन तो छू जाता है। तो इसी में अभी मैं जो बात करने अभी जा रही हूँ, अभी तो ये उम्र में तो मन का बात तो ज्यादा कुछ बोलना नहीं, खाली सेफ्टी और हेल्थ के बारे में छोड़िए। तो मगर कुछ दिन ऐसे भी थे जब भी हम खुश रहते थे, सबके बारे में सोचते थे। इसी में मैं स्कूल में काम कर रही थी, और स्कूल में मुझे जो जो एक्सपीरियंस मिला वो सब के बारे में कुछ कुछ मैं कहना चाहती हूँ। मैं एक्चुअली आई वाज नॉट वेरी कीन ऑन टेकिंग अप ए जॉब, मगर ऐसा हुआ कि मेरी कुछ फ्रेंड की दीदी आई, बोली कि निवेदिता, तो वुड यू लाइक टू जॉइन स्कूल? मैंने कहा ना, कॉन्वेंट। बोली बाबा जी, कॉन्वेंट आई कैन नॉट, बिकॉज दैट इज इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड कॉन्वेंट मीन्स वेरी they are very fluent in ये, what will I teach them? ऐसे। उसके बाद वो बोली कि नहीं, हमारे बच्चे सेकेंड लैंग्वेज उड़िया ऑप्ट किए हैं, और उसी के लिए उस टाइम सीनियर कैम्ब्रिज था सेकेंड, तो ये उड़िया ऑप्ट किए हैं, उसके लिए सिस्टर बोल रही है वो एक क्वालिफाइड टीचर रखेंगे। तो मैं सोचती थी क्या करूं, तो मेरे प्रिंसिपल मेरे हस्बैंड को भी जानती थी, तो उन्होंने भी ऑफर दिया। बोली कि नहीं, उसको उनको पार्ट टाइम आने दीजिए। पार्ट टाइम माने डेली शी विल गो बैक एट 1 o'clock, बट शी विल कंटिन्यू लाइक दैट। तो मैं स्कूल में आई कि ठीक है पढ़ाएंगे ये, तब तक तो बोर्ड से भी उनको रिकॉग्निशन मिलना था, ये इसलिए उन्होंने एक टीचर रखा। अब तब तक वो जैसे तैसे चला देते। हायर उड़िया के लिए तो कुछ भी प्रॉब्लम हुआ नहीं मुझे, क्योंकि बच्चे अपनी भाषा जानती थी। वो भी एग्जाम में भी वो सब बहुत अच्छा कर रही थी। एग्जाम में देवर वेरी फ्यू इन नंबर एक्चुअली स्टूडेंट्स बने वो हायर उड़िया, बट मेन प्रॉब्लम वाज विद द थर्ड लैंग्वेज, एंड थर्ड लैंग्वेज दे हैड केप्ट टिल 7th क्लास, एंड they have to pass in 7th class, otherwise the board they will not get a certificate. So these girls all together, राउरकेला तब ऐसा एक जगह था कि जब मैंने वेरी फ्यू मैंने all outsiders are working in the steel plant, so from various places they had come, and they like their children to put in the English medium school. 2-3 English medium schools were there, and a convent like that. Odia medium were there, but ordinary people they were going. But whatever it may be, there I started teaching. But these Odia, non-Odia girls, it was a headache for me. Because when I saw and that what they are writing, I cannot understand, not even a single sentence, not even a single word. Then I asked them, what you are writing? No, like this one you write and get a pass mark. Yeah, right? You cannot do like that. Because you have to learn the language at first. Even if you're not language proper sentence, you have to do right. So, but these South Indian girls, वो सब तो कर लेती थी, क्योंकि उनके लिए हिंदी उड़िया वो बहुत माने हार्ड वर्क करके वो कर लेती थी। मगर नॉर्थ इंडियन गर्ल्स के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया। तो फिर मैं एग्जाम ही आ गया, एक क्लास टेस्ट, उसमें इन्होंने सब क्या लिखा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर मैं उन सबको बुला के बोली, देखो तुम जब एक कंपोजिशन लिखती हो इंग्लिश में, क्या लिखती हो, कैसे लिखती हो? वी थिंक इन इंग्लिश एंड राइट इन इंग्लिश। और हिंदी में भी वी थिंक इन इंग्लिश, राइट इन हिंदी, but can you get a good mark? Hindi is our language, we can do manage. But Odia, you think in English, write in Odia means you will not be able to do right. Think in Hindi, then you write in Odia. Just try. So they tried their best, and finally they somehow what the method I taught them, they could get a pass mark.
So that was one problem with me, but I was happy that they could learn a language and little language, but whatever it may be, they were happy and I was also happy. So in those days, sister, our principal was giving a craft class also for the teachers. So craft usually the pattern of the school was teaching that cross stitch cushion. They were only making cross stitch cushion and cross stitch table, all that with cross stitch. It was easy. But I introduced some other. I told, no, better let me do that. Let them teach knitting and tatting, lace, embroidery, everything. Those who were interested, they did. And those who were not interested, somehow they managed to get so showing that complete work, asking, borrowing from someone. They were showing it. That also they were getting C. That was also a must for them. They had to do that in that. It was there in the syllabus. So ऐसे ही लड़कियां करती थी, मगर ये सब का रिजल्ट मुझे तब पता चला जब मैंने बहुत कुछ दिन के बाद जब लड़कियां विजिट करने के लिए आई थी, अभी 3-4 साल पहले, एक लड़की ने मुझे एक सुंदर सा हैंडबैग प्रेजेंट किया। मैंने कहा कितना सुंदर काम हुआ था, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत सुंदर काम हुआ था। उसमें जो ये गोल्डन स्टिच, गोल्डन एम्ब्रॉयडरी, गोल्डन थ्रेड में एम्ब्रॉयडरी करके बहुत सुंदर करके बहुत डेंटी बहुत डेलिकेटली वो बनाई थी, वो मुझे प्रेजेंट की। मैंने उससे किया, ऐसा तुम बनाती हो? अरे मिस, आई हैव ए बुटीक and my friend's mother told me, you are making so nice things, why have you not started your own business? How to do business like this? But she is in Bangalore now, has her own boutique she has, and she is appointed some ladies, and she is teaching many nice things making also and by selling, and she was very happy. And the other girls also, whatever that the experience they had in the school, how they were in the Odia class, what they were doing in craft class, how they were cheating, showing that others were like that, all they were talking. But I was happy that they could do something which actually helped them in the future. And after another girl also came from some get together, वो लड़की ना ये स्टेट्स में थी, स्टेट्स से आई थी गेट टुगेदर के लिए। ऐसा बात करते थे, वेरी गुड स्टूडेंट, गुड इन ऑल अदर सब्जेक्ट्स, बट क्राफ्ट क्लास दे वर somehow managing, and I was also not very much ये for her. Let her do whatever she knows she will do. But that girl told me, do you know, I am a teacher, I am taking a special class from them, special craft class. What? Why? No, I wanted to teach them something. And the tatting you showed us, and it is very highly appreciated. The tatting lace they made with that embroidery, and that is really one very dainty and looking very nice. And then I felt that as if my whatever I was teaching them is fulfilled. So this was my life in school. Now I remember one day I was just in the staff room. I was just correcting. Then the children who used to give those handwriting when there is a class, adjusting class. What we could ask them to write handwriting and handwriting copy and just submit. One tick, big tick we used to put. But I couldn't, but when I saw some girls are not written properly, so I was putting like this. One of my friends jokingly, she told, Mrs. Sahu, what are you doing? No, I am correcting this. Are you getting Arjun Award? I mean, why? Why should I get Arjun Award? No, you so attentively you are just correcting those handwriting copies. I can't pick up. इसमें क्या है मिसेस चड्डा? मैंने कहा ये तो हमारा काम है, and we have to what for we are doing them, we are correcting them. This is what is wrong in that, and whatever we do, we should do it attentively. No, we can't just like overlook their mistakes. तो वो बोली, वाह आप तो बहुत अच्छा बात करती है। मैंने अच्छा बात क्या, इसमें कुछ अच्छा बात नहीं, जो करना है मन लगाकर करना है। ये तो हुआ हमारा स्कूल लाइफ में।
स्कूल में जो एक्सपीरियंस हुआ, ऐसा करके आई वर्क सर्व द स्कूल फॉर 33 years. For 33 years I served the school, and I was very happy, and the satisfaction I got, full satisfaction I got from school. दिस ये तो मैंने स्कूल का मैंने सर्विस पीरियड में ऐसा सब हुआ। फिर भी हम बड़ों से, अपने बड़ों से कुछ कुछ सीख मिला है हमें, जो कि हम देखते हैं हमारे स्कूल में जो प्रिंसिपल थी वो बोलती थी, यू कैन नॉट प्लीज 100% पीपल, दैट इज कीप इन माइंड व्हेन वी वर अरेंजिंग सम say get together or some a party or something like that, we were going to each person for collecting money, and she told me, you see that somewhere showing getting irritated or something, then she told Mrs. How, you see, you cannot please 100% people, only 95% will agree to what you say, and this 5% will always criticize. So don't put your ear into that. Just leave it. And that was one lesson for me. Actually, that is true also. We cannot please all. Somehow or other, one or other will be unhappy. And from our parents also, we learn so many things जो कि मन में रह जाता है, और बच्चों को भी हम बाद में जो बोलते हैं, सिखाते हैं, तो वो भी तो कुछ कुछ सीखते हैं। जैसे मेरे फादर इन लॉ, वो टीचर थे, वो बोलते थे, देखो अगर कोई स्टूडेंट मैंने लैक ऑफ फंड के लिए डिसकंटिन्यू करना चाहता है, तो उसे फुल होल हार्टेडली मदद करो, so that she will continue, he or she will continue his studies. That is one thing I like, what he told, is always I kept in mind. And I learned something from my father. My father also used to say, always keep an alternative in life, which will help you in future. You will never get disheartened in your failure. That was also a very good lesson for me. So I always that, and now I tell my children, grandchildren also, whatever my father had told, that is 100% correct, and I feel, and I also do what he wanted also. If I see that there is some alternative, I always keep an alternative. If there is a alternative, we can do something, or we can. There is a way. If this road is closed, the other road we can go. And in that case, you will not feel disheartened, disappointed, and surely you will will do something. ये सब जो सीख जो हमको मिला बचपन में बोलिए या स्कूल में, ये होने के बाद भी जो मिला, ये सब ना अभी तक कुछ साल के बाद ही हम सब ये सब सोच पा रहे हैं और कंटिन्यू भी कर पा रहे हैं। नहीं तो लगेगा कि क्या है ये जिंदगी, क्या है ये, ऐसा ही लगेगा। तो ये सब जो मैंने सीखा, मैं सब आपको थोड़ा शेयर कर रही हूँ और देख रही हूँ कि आपको शायद अच्छा लगे या ना लगे, मैं तो बोल नहीं सकती, मगर यही है मेरा मन की बात।